Hello, my name is Mohammed Atwa. I am a Egyptologist from Egypt. We are here representative the tomb of Tutankhamun, one of the famous tomb in ancient Egyptian history. We are trying here to explain to the normal people the content of the tomb itself in five galleries. The first floor, we are explaining the afterlife of the king, his death and his mummification, and his coffins and the big shrines. In the second floor, we explain his daily life with his throne and some example of his jewelries, and one chariot and four big statue for him during his hunting and fishing. Our main purpose here in India with our first exhibition here in Jaipur to start a tour in many cities in India to explain to the people the history of this king and also history of the tomb which is discovered 100 years before. I hope that many students can understand the concept of the tomb itself, and also I hope that many visitors can enjoy this visit and our exhibition. Thank you so much. Here we are in the burial chamber of the tomb. We have examples for the coffin of the king himself. This is the first one, this is the second, and this is the third. The first one is here, and both of them they are putting here. And there's this sequence, like we see here. All these three coffins, in the end, we put it in this shrine, and this shrine we found it in another three bigger shrine in the tomb. And we can see in the both sides the scenes of the tomb itself of the king. Here the king greeting the goddess greeting the king, and here the god Osiris protecting the king in afterlife. Here we explain the treasury room, which is the second room in the tomb. This is a canopic shrine of the king, and some boxes. We can find here this canopic shrine. Here is a canopic box, which four parts of the body of the king: his lung, his liver, two parts for his stomach, put in here in four different shapes and closed by this cover. And all this canopic box go to the shrine, which is here. This shrine is protected by four goddesses from each side. And this juggle shape here is protecting the tomb and the shrine from thieves and from any enemies. We have here two symbols of boats of the kings with two cabins. These two symbols, just a symbol from the many boats found in the real tomb, more than 50 symbols of the boats found there. These boats which the king was using in daily life, and he wants to reuse it again in afterlife. But of course, of the size of the boat itself, it's very big to put it in his tomb. He decided at that time to make some small symbols. He can put it and he can enjoy it in the next life. Here's some example of the boxes of the king that was using in his daily life. We can find here this clothing box, and we used to name this box hunting box, because here the king on his chariot hunting animals. Another box here
We can see the king with his wife surrounded with different kind of planets. तुतनखामुन या कहें इजिप्शियन आर्ट करीब 3,500 वर्ष पुरानी, जिसके बारे में हम केवल सुना करते थे, आज हम यहाँ जीवंत देख रहे हैं। किस तरह उन दिनों में कला के प्रति लोगों का रुझान रहा, चाहे वो दैनिक जीवन में रहा हो या आदमी के मरने के पश्चात रहा हो। किस तरह उस कला को सुरक्षित रखने का एक तरीका मम्मी बनाकर जिस तरह मिस्र के लोगों ने रखा, वो पूरे विश्व के लिए एक उदाहरण है। और हमें प्रसन्नता है आज इस प्रदर्शनी को यहाँ देखकर कि वहाँ की कला के विकसित रूप को हम आज जीवंत देख पा रहे हैं। मैं विनय शर्मा आर्टिस्ट हूँ और इसमें व्यवस्थापक भी हूँ। कई दिनों लगभग 3 वर्ष पहले भी हमने एक इसका छोटा रूप यहाँ प्रदर्शित किया था और उसी समय से इसकी प्लानिंग हुई थी कि किस तरह इस आयोजन को यहाँ किया जाए। और आज बड़ी प्रसन्नता है कि यहाँ के लोगों को इतनी मुश्किल एग्जीबिशन, जो आसान नहीं है, इतनी दूर से सारा सामान आना और फिर उसको यहाँ प्रदर्शित करना, ये एक कलाकार की जीजीवी का जो उसका एक जीवट वो पक्ष वो यहाँ देखने को मिल रहा है। तो यहाँ के लोगों के लिए, यहाँ के विद्यार्थियों के लिए, कला के विद्यार्थियों के लिए या इतिहास के विद्यार्थियों के लिए ये प्रदर्शनी बहुत ही महत्वपूर्ण और उपयोगी है। तो मैं तो आग्रह करूँगा तो यहाँ के कला विद्यार्थियों से, यहाँ के इतिहासकारों से कि वो आके देखें इस प्रदर्शनी को और 3,500 वर्ष पुरानी कला और संस्कृति के बारे में जानकारी लें। तुतनखामुन एक किंग जो हमेशा सपनों में आते थे, बुक्स के अंदर दिखाई देते थे, आज हमें मतलब सामने देखने को मिल रहा है। मैं आपको नहीं बता सकती कि इतनी खुशी हो रही है। ये मेरे लिए बहुत बड़ा पल है क्योंकि मैं इजिप्ट नहीं जा पाई और सपने ही देखती रही, लेकिन आज इजिप्ट यहाँ आ गया। उसके लिए आर्टिस्ट और क्यूरेटर्स को थैंक यू और आइएगा ज़रूर, डोंट मिस। थैंक यू। हाय एवरीवन, मेरा नाम रानी कुबावत है एंड आई एम फ्रॉम जयपुर एंड हम यहाँ पे है जवाहर कला केंद्र में एंड यहाँ पे इजिप्शियन आर्ट का बहुत अच्छा कलेक्शन है एंड आई एम रियली फैसिनेटेड विद इजिप्शियन आर्ट। मुझे हमेशा से लाइव देखना था कि कैसा इजिप्शियन आर्ट होता है और क्या पास्ट ईयर्स में हुआ है एंड आई एम सो फैसिनेटेड विद दिस। आई होप यू कम एंड जॉइन एंड सी द ब्यूटी ऑफ इजिप्शियंस। थैंक यू। Hello everyone, my name is Anju Soni. I am from Udaipur and the work here is from Egypt and the work is very fascinating. I love Egyptian art from my bachelor's and the work is very good and worth watching. So please सब जने यहाँ पे आए और देखिए Egyptian art और उनके आफ्टर लाइफ के बारे में। It's very interesting and knowledgeable. Thank you. I am आर्ची जिंदल और मैं ICG यूनिवर्सिटी से हूँ। ये मुझे काफ़ी अच्छी एग्जीबिशन लगी। जैसा कि हमें आर्टिस्ट ने बताया, इस पे गोल्ड का परत है और काफ़ी सारे मटेरियल्स यूज़ किए हैं और जो क्यूरेटर्स ने हमें हिस्ट्री के बारे में बताया है उससे मुझे काफ़ी अच्छा लगा है। So hello, my name is Savi and here is the person present who made this all stuff. So I just want to ask that all that stuff there is made of gems, precious gems. Yes. Yes. Yeah, sure. The original is made of gold. This one made of copper, plated real gold, 24 karat, and stones, real stones. So we try to make the same effects, the same shiny, same plated eyes, plated in hair, plated names, it's plated, all is inlaid, so it's perfect. It's the same size also, yes. So it's
almost as the same as it was, Yes. as the real one. By measurement, by all materials is the same. Yes. So, does this mask resemble the face of the king? Yes. Yes. If you see all the faces in the tomb, you have the same character. Most of the pieces in exhibition is the same character. This is the same. If you see this, it's like children more. It's not old one. So it's the face. It's like a baby. It's 16 years, 17 years maximum. So because he died in this time. Okay, so he died in early age, like in a teenage. In a teenage. Yes, yes, yes. Thank He you. died. Thank you Thank so you. much. Thank you so much. जवाहर कला केंद्र एक ऐसी कला का अनोखा केंद्र जहाँ एग्जीबिशन का ऐसा समा बंधा हुआ है कि जिस पर आप देखकर चौंक जाएंगे। यह इजिप्ट यहाँ आया हुआ है। अपने घर से आप बाहर निकलकर आए और इजिप्ट के दर्शन कीजिए अपने जवाहर कला केंद्र में। ये देखिए किस तरह की मम्मी यहाँ रखी हुई है। आप शायद एक बार देख करके चौंक जाएंगे कि किस तरह से उनका ये सिस्टम हुआ करता था। अवश्य पधारें जयपुर के जवाहर कला केंद्र में।